अजीम है कितना अली का दरवाजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भला अजीम है कितना अली का दरवाजा। फजीलतों ने भी ढूंढा अली का दरवाजा। भला अजीम है कितना अली का दरवाजा। खड़े थे लोग बहुत थे इंतजार में, लेकिन खड़े थे लोग बहुत थे इंतजार में, लेकिन सितारा देख के उतरा अली का दरवाजा। भला अजीम है कितना अली का दरवाजा। नबी के शहर में तुम किस तरह से जाओगे, नबी के शहर में तुम किस तरह से जाओगे, के रास्ते में पड़ेगा अली का दरवाजा। भला अजीम है कितना अली का दरवाजा। कसम है खाने काबा तेरे तबस्सुम की, कसम है खाने काबा तेरे तबस्सुम की। खुदा के घर में भी देखा अली का दरवाजा। भला अजीम है कितना अली का दरवाजा। मुखालिफीन भी ये सोच कर यहाँ पहुँचे, मुखालिफीन भी ये सोच कर यहाँ पहुँचे, कभी ना बंद मिलेगा अली का दरवाजा। भला अजीम है कितना अली का दरवाजा। वसीलतों ने भी ढूंढा अली का दरवाजा। भला अजीम है कितना अली का दरवाजा। तो है ऐ दिल तू फिक्र मत कर, बेशक खुदा तो है, रोजे हशर में तेरा वो मुस्तफ़ा तो है। हसनैन और फातिमा खैरुन्निसा तो है, हसनैन और फातिमा खैरुन्निसा तो है। जो कोई न होता तो क्या मुश्किल कुशा तो है। सलवात હમણાં સુધી આપણે નવું નવું સાંભળ્યું, માશાલ્લાહ નારા પણ સાંભળ્યા. તો ગુજરાતી કહેવત છે જૂનું ઈ સોનું. અઝમત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. खुशी आजे आहा के भी खुशी आजे, थया मुश्किल कुशा पैदा हमारा पेशवा का, हमारा पेशवा का।
થયા મુશ્કિલ खुशा જગતમાં ધૂમ છે આજે વિલાદત પાસ આદતની અભી અતિ શુભ આજનો અવસર અતિ શુભ આજનો અવસર થયા મુશ્કિલ કુશા ખુશીની ઈદ મોટી છે મોહિબા ને અલી આજે અલી આકા અલી સરવર અલી આકા અલી સરવર થયા મુશ્કિલ કુશા પેદા આહા કેવી ખુશી આજે આહા કેવી ખુશી આજે થયા મુશ્કિલ કુશા પેદા કદમ મોહરે નબુવતના કદમ મોહરે નબુવત પર ઉભા રહી દોષ અહેમદ પર કદમ મોહરે નબુવત પર ઉભા રહી દોષ અહેમદ પર બુતોને તોડવા આજે બુતોને તોડવા આજે થયા મુશ્કિલ કુશા પેદા સખાવત આપની એવી કે એક રોટીના બદલામાં સખાવત આપની એવી કે એક રોટીના બદલામાં કતારો ઊંટોની દેવા કતારો થયા મુશ્કિલ કુશા પેદા આહા કેવી ખુશી આજે આહા કેવી ખુશી આજે થયા મુશ્કિલ કુશા પેદા થયા સૌ कैद इबलीसो मलउन शैतान घबराणो थया सौ कैद इबलीसो मलउन शैतान घबराणो खुदाना घर मही जारे खुदाना घर मही जारे थया मुश्किल कुशा पैदा आहा केवी खुशी આજે આહા કેવી ખુશી આજે થયા મુશ્કિલ કુશા પેદા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ સમજે શબીરનું મનાવે છે એને ઝહરા દુઆઓ આપે છે સમજે શબીરનું મનાવે છે એને ઝહરા દુઆઓ આપે છે સમજે શબીરનું મનાવે છે એને ઝહરા દુઆઓ આપે છે ચાંદમાં હે યઝાનો જોઈને યાદ કરવો બલાની આવે છે યાદ કરવો બલાની આવે છે એને ઝહરા દુઆઓ આપે છે ગમજે શબીરનો મનાવે છે ગમજે શબીરનો મનાવે છે એને ઝહરા દુઆઓ મજલિસે શહેનો મર્તબો જો યા ઇમામે ઝમાના આવે છે યા ઇમામે ઝમાના આવે છે એને ઝહરા દુઆઓ આપે છે ગમજે શબીરનો મનાવે છે ગમજે શબીરનો મનાવે છે એને ઝહરા દુઆઓ આપે છે
मजलिसो मात में हुसैन करो या बहुज सैयदा निभावे छे या बहुज सैयदा निभावे छे एने ज़हरा दुआओ आपे छे गमजे शबीरनो मनावे छे गमजे शबीरनो मनावे छे एने ज़हरा दुआओ आपे छे मोहम्मद प्रमुख साहब से कहते हैं मियानी तिमनो प्रवचन पेश करे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nandelian mazaral ajaibe tazidao onaraka finoyebe kullo hamim wagamim senjali bevalayatika ya Ali ya Ali ya Ali bawaze bulan salavat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hazin Mefil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'occasion du viladat de l'émir des croyants, Hazrat Ali Amir al-Mominin alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. je vous adresse à tous, à mon nom et à celui de mon comité, Kousiali Mumbarak, nous formulons le vœu pour qu'enfin revienne la stabilité et le calme dans nos lieux de pèlerinage et particulièrement à Cham, ville martyrisée, ville meurtrie. Faisons doigt pour que Allah subhanahu wa ta'ala soulage la souffrance de ces peuples et que nous ayons enfin libre accès pour les ziarats de nos imams alayhi salam. Amin. Je voudrais également, en ce jour, souhaiter un bon anniversaire à tous ceux et toutes celles qui avaient choisi 13 Rajab pour leur union aux yeux de l'islam, et en particulier à Malik et Soukaina pour ne pas les citer. Mashallah, mashallah. Le hasard du calendrier veut que cela fait exactement 3 ans aujourd'hui que nous avons inauguré l'extension du Mefil Zainab. Et cela fait également 3 ans que m'a été confié les clés de ce magnifique édifice où nous sommes réunis. Mashallah. L'heure n'est pas encore au bilan, car il me reste un peu plus de 1 an avant la fin de mon mandat. 1 an et 6 mois. Mais je peux vous rafraîchir la mémoire en vous énumérant un certain nombre d'initiatives que j'ai prises avec l'aide de mon comité. Tout d'abord, nous avons réussi à valoriser le patrimoine qui m'a été confié par le président Al-Hajj Nijar Ali Kasra et de son comité. Alhamdulillah, avec le soutien du comité, nous avons réussi à générer un revenu qui nous permet de faire face aux investissements lourds, à savoir réalisation des studios, travaux de maintenance de nos appartements, investissements dans les locaux neufs, achat d'équipements divers. Ensuite, nous avons réussi à apporter des changements de comportement de chacun d'entre nous. Non pas qu'ils n'étaient pas bons, mais pas adaptés à la nouvelle structure. Ces résultats sont le fruit des efforts de chacun d'entre nous. Et comme je le dis souvent, sans votre implication, rien n'est possible. Et puis, il y a également le travail sans relâche de notre alim résident, Cheikh Moïse Raza, Allah.
Cheikh Moïse Reza, qui fait un grand travail pédagogique dans ses discours, par un travail de répétition, car peu nombreux sont parmi nous capables d'assimiler les paroles dites au mimbar. Pour ceux qui ont la chance d'assister au namaz Juma, Cheikh martèle régulièrement, et c'était encore le cas aujourd'hui, qu'il n'y a pas de changement de comportement possible sans l'implication de chacun d'entre nous. Et ceci pour tous les actes de la vie quotidienne. Par exemple, ne pas gaspiller l'eau inutilement lorsqu'on fait vazou. Ne pas garer son véhicule dans les endroits non autorisés. Ou tout simplement se donner la main en expliquant le côté bénéfique de ce geste aux yeux de l'islam et aux yeux de Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les innovations importantes, à mes yeux et aux yeux de mon comité, c'est entre autres l'utilisation différente des écrans de télévision. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les télés servaient juste à montrer le visage du alim pour que les dames puissent suivre les majalis. Aujourd'hui, ces mêmes télés servent pour la lecture des ziyarat et des différents doigts. Et cerise sur le gâteau, et c'est là notre fierté, les versets référencés dans les majalis sont affichés en parfaite synchronisation avec le thème du majalis. Ce résultat est le fruit d'une volonté de chacun d'entre nous d'apporter quelque chose de nouveau dans le seul but de faire avancer la communauté. Toujours en termes d'innovation, le dernier en date, l'application du iPhone du Mefile Zainab, le fruit d'un travail d'une équipe de nos jeunes talents. Le résultat est qu'au moment même où je m'adresse à vous en ce moment, chacun peut lire dans son iPhone les doigts avec les traductions de ce béni mois de Rajab. Une autre victoire pour notre communauté est un changement radical de la procédure lors d'un décès. Et vous en avez eu la preuve lors du décès de Al-Hajj Mohamed Taki et Al-Hajj Asghar Al-Bhai Nasser. Je ne remercierai jamais autant Haji Munawar Waldi, notre vice-président, ainsi que Haji Arif Yuidi du comité funéraire, pour avoir trouvé les solutions adaptées à nos rites et coutumes pour le Ghusl Kafan dans nos centres, au Mefile Zainab et au Mambarga. C'est là également une avancée fondamentale dans le pays où nous vivons. Je pourrais bien entendu continuer la liste des résultats obtenus, mais je ne me présente pas devant vous aujourd'hui pour faire de l'autosatisfaction, ni un bilan, ni une candidature pour une présidence. Bien entendu, tout n'est pas parfait. Bien entendu, nous sommes souvent en désaccord au sein même du comité. Bien entendu, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Non pas dans un climat de compétitivité, mais dans une volonté sincère d'augmenter notre foi dans l'islam et à ouvrir la soif d'apprendre et de comprendre l'enseignement de nos Ahl Bayt alayhi salam. Mais pour cela, entouré de mon comité, même si tout n'est pas toujours rose entre nous, et Dieu sait que ce n'est pas toujours facile, nous avons un défi à relever tous les jours, toute l'année, un défi connu dans tous les jamats, en France et à l'étranger. Ce défi se résume en une seule phrase. On a besoin de votre présence. Tamari Hazar ni Jarur Tche. Inch'Allah, dimanche prochain, je ferai partie d'un groupe de 30 personnes en pèlerinage pour l'Iran. Nous ne vous oublierons pas dans nos doigts pour que vous aussi, Inch'Allah,
puissiez accomplir ziyarat de notre imam. Mais en attendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplisse nos souhaits à tous, faisons un effort pour faire ziyarat à notre méfil où nos panjatans sont parmi nous, Inch'Allah. Rappelez-vous les paroles qu'a exprimées dans son Marassia notre illustre Nawakhana Hadi Ashik Dandi. Inch'Allah, c'est une occasion pour chacun d'entre nous d'être présent auprès de l'imam du temple. Pour cela, nous avons pris des initiatives pour que les majalis ne soient pas considérés comme une contrainte, mais une occasion de pèlerinage agréable. Un timing rigoureux où les cérémonies commencent à 20h30. Un temps de parole limité, même si parfois un petit dérapage de 5 minutes est constaté. Un niaz à chaque fois où nous jugeons cela utile, comme c'était le cas aujourd'hui. Bien entendu, nous n'arriverons jamais à satisfaire 100% de la communauté. Certains, influencés par Shaitan, trouveront à redire sur la philosophie de la nécessité de faire des niaz ou autres événements. Il faut leur expliquer. Mais pour cela, encore faut-il que vous soyez là, présents pour écouter et comprendre à quel point ce qui reste cloîtré dans sa maison est perdant. Perdant particulièrement les jeudis, jour où Allah subhanahu wa ta'ala accorde son pardon à celui qui le sollicite. Perdant les marhoum qui attendent désespérément les soulés Fatiha de notre part. Perdant ceux qui habitent à proximité immédiate du méfil, et je pense particulièrement à certains de nos étudiants en colocation ici. Alors, réveillons-nous, ouvrons les yeux, prenons conscience de l'importance de donner notre présence ici aussi souvent que nécessaire. Je ne veux pas me substituer à Cheikh Moïse, je n'ai pas son ilm. Mais, Inch'Allah, j'espère avoir eu les mots justes pour réveiller la conscience de chacun d'entre nous. L'occasion m'est donnée aujourd'hui pour vous rappeler que les cérémonies du mois béni de Rajab, Shaban et Ramzan sont entre autres commémorées par des niaz. C'est une occasion pour chacun d'entre nous de participer et souscrire même un montant symbolique pour que ces traditions perdurent. Avant de terminer, je voudrais, à mon nom et au celui de mon comité, renouveler nos profonds remerciements, particulièrement au pôle cuisine et au pôle Faez, qui seront très sollicités pendant ces mois bénis. Je ne peux pas les citer, mais ils se reconnaîtront tous. Je voudrais également partager la passion qui est la mienne et celle de mon comité dans le travail du Jamaat. Je lance un appel à tous ceux et toutes celles qui veulent s'impliquer avec nous pour nous soulager dans certaines tâches. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Je voudrais, avant de terminer, mettre à l'honneur en ce jour de Viladat un joyau dont nous sommes le seul Jamaat à posséder. Je dis bien le seul Jamaat à posséder. Une personne aussi simple et discrète que son entourage, père, mère, frère, sœur. Une personne dont la gentillesse et le sourire n'ont pas d'égal et on devrait s'en inspirer. Une personne pleine de savoir et d'intelligence. Une personne qui a fait preuve d'une volonté qui n'est pas donnée à tous. Une personne qui se donne la passion sportive depuis 19 ans. 5 fois champion de France, 3 fois meilleur buteur, champion de France, division 2 cette année. J'ai nommé Muntazir Thierry Vasram, sur qui je vous demande de verser une pluie de salawat.
Merci à vous tous de m'avoir écouté et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que les mots que j'ai employés ce soir vous aidera à prendre conscience sur la nécessité de l'effort de chacun pour que Mefil et Zainab ait la splendeur qu'elle mérite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. शाहिबरदान शेरियादान कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अलीला सैफिला जुल्फिकार बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अलहाज हैदर अली नसीम अली शरीफ तरफती मरहुमा माताजी रोशन बानो अकबर अली गेला તેમ મરહુમ પિતાજી અસગર અલી હૈદર અલી શરીફની રૂના સવાબ માટે મદ્રેસા ફંડમાં 100 યુરો અર્પણ કરવામાં આવે છે। એક કનીઝે ફાતિમા તરફથી, એક ઓર કનીઝે ફાતિમા તરફથી, એક ઉમેદવાર તરફથી મિન્નતની રિસાદ ઇનાયત નૂર મોહમ્મદ દાયા તરફથી કુલ મરહુમ મોમિનીન વલ મોમિનાતની રૂના સવાબ માટે ફામી શાહિક રઝા અકબર અલી તરફથી મરહુમા નાની રહેમતભાઈ અલીભાઈ રામજી તેમ કુલ મરહુમ મોમિનીન વલ મોમિનાતની રૂના સવાબ માટે એક બંદે ખુદા તરફથી તમામ મરહુમીનની રૂના સવાબ માટે પૂરીના ન્યાસ ફંડમાં ઉમેદવારો તરફથી 115 યુરો અર્પણ કરવામાં આવે છે। એક ઉમેદવાર તરફથી પૂરીના ન્યાઝ માટે 100 યુરો અર્પણ કરવામાં આવે છે। એક ઓર ઉમેદવાર તરફથી ખીર પૂરીના ન્યાઝ માટે 50 યુરો અર્પણ કરવામાં આવે છે। કુલ મરહુમ મોમિનીન વલ મોમિનાતની રૂના સવાબ માટે એક સૂરે ફાતિહાનું તેમાસ છે। જે ભાઈઓ ઝિયારતમાં જઈ રહ્યા છે તેમની પાસે વિનંતી છે કે તે અહીં આવે જેથી કરીને તેમને જામીન ગટ્ટો પહેરાવવામાં આવે। તે માટે હું વિનંતી કરીશ શેખ મોઈઝ પાસે કે તે અહીં આવી જામીન ગટ્ટો પહેરાવે પર મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ दो चैन से वो अली का गुलाम है सलात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दारा का नाम है कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला पहाड़ कहते हैं नादे अली अली मुश्किल हमारी हल करो मुश्किल खुशहाली नारे हैदरी बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दारा का नाम है न सिकंदर का नाम है, दारा का नाम है न सिकंदर का नाम है, मेरी जुबां पे फातह खैबर का नाम है। जो इनका नाम है वही दावर का नाम है, कुर्बान जाएगा वो बराबर का नाम है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हर एक कदम पर तारी जरूरत है हुसैन, हर एक कदम पर तारी जरूरत है हुसैन, दुनिया ने हजी तारी जरूरत है हुसैन। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस्लाम की कश्ती के सहारे हुसैन, ईमान की मंजिल के सितारे हैं हुसैन। वो जिसमें हुसैनियत हुसैन उसके है, जो जिसमें हुसैनियत है उसमें जिससे हुसैन है। أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم। તમારી બેઠકોને તમારી મજલિસોને અલીના ઝિક્રથીને ઝીનત આપો। અઝીઝાને મુહતરમ આવી મહેફિલની અંદર જરૂર અને જરૂર અલીનો zikr કરવામાં આવે, કારણ કે અલી એ જાતનું નામ છે જેનું નારા અલી યા અલી ઓ નારા અલી યા અલી ઓ નારા અલી યા અલી। मेहरबानी अली की कहिए कि ये है मेहरबानी
ज़मीन व ज़मा पर तो है ही हुकूमत, है काबा मगर राजधानी अली की। कहिए कि ये है मेहरबानी अली। मैं कहा मदहानी अली की। कहिए कि ये है मेहरबानी अली की। ये कहती है हंस हंस के दीवार काबा, ये कहती है हंस हंस के दीवार काबा, मैं दिल पे लिए हूँ निशानी अली की। कहिए कि ये है मेहरबानी अली की। कहाँ मैं कहाँ मदहानी अली की। कहिए कि ये है मेहरबानी अली की। कहिए कि ये है मेहरबानी अली की। वहाँ तक सलीमा को ने अशआर पहुँचे, वहाँ तक सलीमा को ने अशआर पहुँचे, जहाँ तक भी हो हुक्मरानी अली की। कहिए कि ये है मेहरबानी अली की। कहाँ मैं कहाँ मेहरबानी अली की। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान मुहतरम, શું ક્યારે આપણે સવાલ કર્યો કે આટલા વર્ષ થઈ ગયા મૌલૂદે કાબાને, પણ તા કયામત અલીનું zikr ન મિટ્યું? એમાં રાઝ શું છે? સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે અલીનો હું કલમો પઢું છું, જેને અલી કરી નાખ્યું કે અલીના કામકાજના કારણે અલી અમર બની ગયા, અલીનું zikr તા કયામત બાકી રહી ગયું. હું મારાથીને સવાલ કરું, અલીની જિંદગીમાં એવા ક્યા ગુણો હતા જેના લીધે અલી અમર બની ગયા? અને અગર એ ગુણો મારા નજરની સામે છે તો એ ગુણોને મેં કેટલા અપનાવ્યા જેથી કરીને તા કયામત લોકો મને યાદ કરે? દુનિયામાં ઘણા ખરાની યાદ આજ સુધી તાજા છે, ચાહે મુસલમાન હોય યા ગેર મુસલમાન હોય. કેટલા એવા લેખકો છે કે જે મુસલમાન ન હતા પણ આજ સુધી એનું નામ લેવાય છે. ઠીક છે, આ લેખક એક પ્રમુખ સાહેબ કે મહાત્મા ગાંધી, આ નવજવાનો જેના મોટા માશાઅલ્લાહ આટલા મોટા થઈ ગયા છે, આઈન્સ્ટાઈન, હજી નામ માશાઅલ્લાહ બાકી છે એનું. સવાલ કે આ લોકોનું નામ શા માટે બાકી છે? આ લોકોની અંદર ખૂબી એવી શું હતી? અને આપણે તો અલીને માનવા વાળા છે. અરે એક શાયર શું અજબ જાતનો જુમલો કહે છે કે એ લોકો તમે શા માટે મારા ઉપર કતરાવ છો કે અગર હું અલીથી મોહબ્બત કરું? તમે જ્યારે અલીની જિંદગી ઉપર નજર તો જરાક કરો, પછી જઈને અમને મેણા અને ટાણા આપો કે અલી જેવાથી મોહબ્બત કેમ ના કરે? અરે અલી કોણ છે? અરે અલી એ ઝાત છે જે દુનિયાની સારામાં સારી જગ્યા છે ને ત્યાં એનો જન્મ થયો છે, મક્કા. એ મક્કાની અંદર જે સારામાં સારી જગ્યા છે જેનું ખુદાનું ઘર કહેવામાં આવે છે, એની અંદર એનો જન્મ થયો છે. એ ખુદાનું ઘર પણ એવી જગ્યા ઉપર છે કે જે મસ્જિદુલ હરામ છે, ઇસ્લામની દુનિયાની સારામાં સારી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ મસ્જિદ, એની અંદર અલીનો જન્મ થયો છે. અને અલીનો જન્મ પર જ્યારે નજર કરું તો તારીખ મને બતાવે છે કે જે અઠવાડિયાના સારામાં સારા દિવસો છે ને, એમાંનો જે સૈયદુલ અય્યામ છે, દિવસોનો બાદશાહ અને સરદાર, જુમાના દિવસે, એ દિવસે અલીનો જન્મ થાય છે. અરે અલીથી મોહબ્બત કેમ ન થાય? આ એમાં બહેતર જગ્યા ઉપર મસ્જિદે કૂફા. અરે દુનિયાને છોડીને જાય છે તો એવા અમલની અંદર જાય છે કે જે બહેતરમાં બહેતર ઇસ્લામનો અમલ છે. શું છે? નમાઝ. અરે નમાઝ જે છે એની અંદર જે બહેતરમાં બહેતર ખુદાને પસંદીદા અમલ છે ઈ પણ અલીની જિંદગીમાં છે. અલીની શહાદત પણ સજદા. આ શહાદતનો સમય પણ જોઈએ તો જે મુસલમાનોના 12 મહિના છે એમાં સારામાં સારો મહિનો માહ રમઝાન અલ મુબારક, એ પણ અલીની અંદર.
એ બહેતરમાં બહેતર મહિનાની અંદર જે એક રાત 1000 મહિના કરતા બહેતર છે એની અંદર શબે કદ્રની અંદર જ્યાં પણ જાઉં છું અઝીની ફઝીલત આવે છે. એ મુસલમાન અગર આલીથીને મોહબ્બત થઈ જાય તો એમાં નવાઈ શું છે? કહ્યું, હે પરવરદિગાર, હું આવેલી છું, હું તારા ઉપર ઈમાન રાખું છું, તારા નબીઓ ઉપર પણ ઈમાન રાખું છું, તારા નબીઓ જે કિતાબ લાવ્યા એના ઉપર પણ ઈમાન રાખું છું, તારા જેટલા રસૂલ છે એના ઉપર પણ ઈમાન રાખું છું. એ ખુદાયા, તું ગવાહ રહેજે કે ઇબ્રાહીમ જે કહી ગયા ને એની સુન્નત ઉપર હું ચાલતી આવેલી છું. એટલા માટે ખુદાયા હું તને વાસ્તો આપું છું, આ તારા ઘર ખાને કાબાનો તને વાસ્તો આપું છું એનો કે જેને આ ઘરને ચડાવ્યું છે, જનાબ ઇબ્રાહીમે એનો વાસ્તો આપું છું કે જે મારા શિકમની અંદર જે બાળક જ્યારે હું સુસ્તી મહેસૂસ કરું છું, જ્યારે હું અકેલી હોય છું તો એ મારાથી ને વાતો કરે છે. ખુદાયા મારા એ કામને તું આસાન બનાવી દે. અઝીઝો, અલી દુનિયામાં આવે પહેલા જનાબ ફાતિમા બિન્ત અસદ મારે અને તમારી સમક્ષ વાતોને બયાન કરે છે કે લોકો જુઓ, આ કામ માટે ખુદા પાસે હું જનાબ ઇબ્રાહીમનો વાસ્તો આપું છું. એ જ જનાબ ઇબ્રાહીમે જેને કહ્યું હતું કે મારા નામો નિશાનને હંમેશ માટે રાખજે. અઝીઝો, આપણે ઇબ્રાહીમ તો થવાના નથી, મૌલાએ કાયનાત તો થવાના નથી, પણ આની જાતા જાતા અમુક વસ્તુઓ કહી ગયા છે. કહ્યું, અહીં મારા માનવા વાળાઓ, તમે મારા જેવા તો ન થાવ, કાંઈ વાંધો નથી. वो आइनूनी व्यवहार, તમે થોડી મહેનત કરો, થોડી કોશિશ કરો અને જેટલું મેં તમને શીખવાડ્યું છે, અલી કહે છે એના ઉપર. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أبي الغرباء. والسلام عليكم يا سلطان يا ابن حسن ابن موسى الغلام. كنت شفينا وشفي والدينا في يوم الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.